I started reading more books so that I can communicate my thought very well. I start reading loud reading so that my voice should be very bold and clear, and it is very crisp so that everyone is able to understand it. Absolutely. Okay. I yes ma'am, and there's the one technique ma'am, I'm not able to recall the name, but मैम उसमें ना आप पेंसिल मुंह में रख के बोलते हो, तो मैम that helps you to clear your voice, and that is very good thing ma'am. So ma'am, the interview once asked me कि you have gone trekking site, मैंने कहा yes, कहाँ गए थे, मैंने कहा सर चंद्रशिला गया था, कहा ओके नाइस, कितने लोग गए थे, मैंने कहा सर 5. Okay, now you reach the top of the mountain, now you are coming down and suddenly आपके पैर का दोस्त मुड़ गया and he is suffering a lot. मैं कहा कि सर मैं इसको शूज निकाल के एंड रब करूंगा, देखूंगा कि सही है, नहीं कह रहा है क्योंकि नहीं वो सही नहीं हो रहा है. मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, आई हैव गुड फीलिंग, मैं उसको लेके आ जाऊंगा नीचे शोल्डर पे. कि नहीं ही इज 100 kg, यू कैन नॉट डू दैट. मैंने कहा ओके मैं फिर on the mountains there are some trees. मैंने कहा मैं उसका help with the help of those tree woods and my shirt I will create a stature. So he said okay, now I went heroic here. I said कि now I will create a rolling stretcher जो ऐसे रोल करेगी, तो उसको लेके नीचे आऊंगा. So but this is not the right answer. The more clear the PIQ is, the better impression you get in the start. Right. So ma'am, or ma'am, in every domain ma'am, you must master the reasons कि अगर आपके 12th में percentage कम है तो क्यों है. Hi everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav, and in today's video we have Siddharth. Siddharth has experience of 17 attempts. In this journey, he has not only faced screen outs, conference out, but also 2 recommendations. One recommendation is in SSC Tech entry, where he has secured all in rank 45, and another one is in Navy entry. In this video, we have talked about a lot of factors as he has given SSP through written entries as well as the direct entries. He has cleared all kind of written exams like NDA, AFCAT, CDS, and Indian Coast Guard. And along with that, we have talked about a lot of mistakes that he has done throughout his journey, which he has talked in detail with various examples. I hope you'll get to learn something new. Without any further delay, let's back to the video. Hi Siddharth, welcome to the platform, and I'm super excited for this video. 17 attempt की journey and getting recommendation back to back, that is a huge kudos to your success. And definitely हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, but I'm super excited to talk to you. Thank you ma'am, thank you for the opportunity to be here ma'am. Then अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, how you have really prepared, because 17 attempt की journey requires a lot of patience, and इस attempt के अंदर कई बार हम we feel like giving up also, but this is a huge journey to cover up. तो क्या मोटिवेशन फैक्टर था आपके लिए, क्या आपकी जर्नी रही है, आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, एंड इन व्हिच अटेम्प्ट यू गॉट द रिकमेंडेशन? Ma'am, I belong to Gorakhpur, and ma'am, I completed my academics, primary academics from Kendriya Vidyalaya number 1 Air Force Station Gorakhpur. Okay. And ma'am, it is an Air Force station, so it is also always a motivation factor for me. Okay. I have seen aircraft flying over my head in the morning while praying to God. So ma'am, that is also a major motivation for me. And regarding the same, ma'am, I have cleared multiple examinations such as NDA, CDS, AFCAT, ICG, and I also appeared in the SSC Tech Navy, SSC Tech IT. So ma'am, these are the attempts I have been through. That leads to the count of 17. Okay. And in my graduation, I completed from KIT group of institution that is in Ghaziabad itself, and in the majors of computer science. And after that, I worked into the MNCs also as an XR developer. Okay. And this is my basic journey, which I have been through. So you were working when you were appearing for SSP? Yes, ma'am. My God, okay. Then we have a lot of things to discuss, सिद्धांत. तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बताया 17 अटेम्प्ट की जर्नी रही है, एंड स्पेशली अगर मैं डायरेक्ट एंट्री के बारे में बात करूं, तो डायरेक्ट एंट्री के अंदर अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहता है.
ज्यादा कैंडिडेट्स जाते हैं, यू हैव गॉन थ्रू एवरी काइंड ऑफ एसएसबी, आई एम श्योर। तो डायरेक्ट एंट्री स्पेशली अगर जिसमें रिकमेंडेशन मिला है मैं उसकी बात करूं, व्हाट आर द डिफरेंसेस एज कंपेयर टू द रिटन एंट्री? बिकॉज कहीं ना कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज के रिस्पेक्ट में, मेरिट के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता है, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? Ma'am, the attempts in which you are going through technical, like technical attempts or written attempts, major difference here, ma'am. In technical attempts, the technical questions are there. Your personality is also judged on the behalf of that. Okay. The way you are specialized, आप जिस भी जो भी domain है आपकी, you have knowledge in that particular field or not. That is a very crucial thing. Okay. And ma'am, in the non-tech or the somewhere in serious attempts, the intellect is majorly preferred. Means you have the awareness of surrounding the geopolitics. Also, it is also very crucial in your technical attempt. But there is another knowledge which is added up in the technical the entries is technical knowledge. आपको बेसिक फंक्शनैलिटी चीजों की पता होनी चाहिए आपके ही डोमेन की. Okay. Because in the future you are about to do some technical actions. So that is really needed for a technical graduate to be aware of. Okay. And in terms of screening also कितने लोग आते हैं? मेरे को लगता है कि एज कम्पेयर टू रिटन एंट्री, नॉन रिटन एंट्रीज जो डायरेक्ट एंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, उधर ज्यादा क्राउड आता है बिकॉज फ्री की एंट्री है, तो मेरे को स्टिल ही फील आता है कि काफी ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं. तो डिड यू एक्सपीरियंस द सेम? Yes, ma'am. In CDS, ma'am, maximum जैसे CDS OTA and CDS INA है, तो मैम इसमें मैक्स टू मैक्स आपका 70 या 75 आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं. बट मैम ऑन द अदर हैंड इफ वी वॉच ओवर द टेक्निकल एंट्रीज, मैम उसमें 200 प्लस आ जाते हैं. ठीक है. ओके. सो मैम दैट इज वन ऑफ द फैक्टर मैम, जिसकी वजह से यू हैव टू बी शार्प इन योर स्किल्स. बिल्कुल. राइट. So that you are able to convey your thoughts very effectively. So ma'am, that is the one of the major difference of screening in technical and non-technical. All right. अब सिद्धांत, अब जैसे जैसे हम एसएसबी के बारे में बात करें तो हम काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई रियली वांट टू स्टार्ट कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, बिकॉज जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ता है सिद्धांत, पेशेंस लूज करने लगते हैं. कहीं ना कहीं स्क्रीन आउट हो रहा है या कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है, तो वी ट्राई टू फाइंड वेज कि कहाँ पे हम एग्जैक्टली गलती कर रहे हैं. तो आपने प्रिपेयर कैसे किया? अलॉन्ग विद दैट रूटीन आपका क्या था प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड एग्जैक्टली आप कैसे अपने नॉलेज फैक्टर पे काम करते थे? Ma'am, like from the primary, as I talk about my NDA and all attempt, मैं मेजरली यूट्यूब से प्रेफर करता था चीजें पढ़ना. एंड फॉर सीडीएस एंड AFCAT अटेम्प्ट्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड अटेम्प्ट्स, मैं देयर इज अ वन चैनल सीडीएस जर्नी, मैम मैं वहां से पढ़ता था. यस मैम, अनुराग भैया, एंड द कंटेंट इज रियली गुड. वहां से वर्थ वॉचिंग है, वो पढ़ने के लिए काफी हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई टुक सम हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड्स जिनके प्रीवियस अटेम्प्ट्स काफी अच्छे प्रॉपरली रहते थे. लाइक दे आर गुड इन intellect. वो पढ़ने में काफी अच्छे हैं. I like to name them also, like Arinjay is one among them, and there's one friend, my Rohit. They are very good with the intellect part. So ma'am, I take help from them only. So they help me for the preparation. And moving ahead, my SSB attempt, मैं पहले मैम initially I didn't analyze my attempt कि मैं कहाँ गलतियाँ करके आऊँ, and I never checked it. So okay. But ma'am, as the attempt started to count, ma'am, एक हिट होता है, मेंटल हिट होता है आपको कि यार इतने अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग. राइट. सो फ्रॉम देयर ओनली मैम आई स्टार्टेड टू एनालाइज माय परफॉर्मेंस, और मैं उसका रिकॉर्ड रखने लगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये मेरा पॉइंट ऑफ फेलियर है, ये मेरा पॉइंट ऑफ फेलियर है. ओके. एंड मैम फ्रॉम देयर ओनली, जब मैम वो चीजें इकट्ठा हो गई तो मैम उनको इम्प्रूव करना शुरू किया. लाइक I started reading more books so that I can communicate my thought very well. I started reading loud reading so that my voice should be very bold and clear, and it is very crisp so that everyone is able to understand it. Absolutely. Okay. Yes ma'am, and there's the one technique, ma'am, I'm not able to recall the name, but ma'am उसमें ना
आप पेंसिल मुंह में रख के बोलते हो, तो मैम दैट हेल्प्स यू टू क्लियर योर वॉइस, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग मैम, बिकॉज उसमें वॉइस काफी क्लियर आने लगती है सामने वाले की, द वे यू नरेट और एक्सप्रेस योर थॉट्स इज आल्सो गुड, कम्युनिकेशन का फैक्टर आपका प्लस हो जाता है। So ma'am, that is the thing, and this is for my written preparation. Okay. And for the SSBs, ma'am, uh, initially as I mentioned कि मैंने अपनी चीजें analyze की, and I started the initially मैंने YouTube पे जितने भी materials हैं उनको analyze, उनसे practice करी, but I do not find major changes, मेरे results same ही आ रहे थे। ठीक है। So ma'am, then I went to JCSSB पाठशाला, and that helped me a lot. Okay. There I are know, by multiple the way, domains. Lieutenant Commander Yashwant sir or Joshi sir, they have been to my channel, so therefore I know the academy. How was your experience? Ma'am, the experience is really good. They are the elite people, as I say, कि मैम उनको काफी अच्छी नॉलेज है मैम चीजों की, और मैम वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं मैम। Okay. Ma'am, they are exactly expressed me what are my weaknesses and how, and some, and they also helped me to work on it. Like उन्होंने बताया कि वो चीजें सही कैसे होंगी, ठीक है। and I followed their footsteps, and I have my recommendations. I know Yashwant sir being one of the coolest GTO because उनसे बात करके कोई भी Yes, इंसान ma'am. बहुत लाइट फील करता है। You know, I record lot of videos. सिद्धांत, तो कई बार ऐसा होता है there are some serious personalities also you interact, but I'm telling you यशवंत सर मुझे लगता है कि इतना comfort zone create कर देते हैं, आप बहुत खुल के सवाल पूछ सकते हो। तो आई एम श्योर कि आपको उनके साथ तो काफी मजा आया होगा। मैम, आई वाज वन अमंग द चैप जो उनको सबसे ज्यादा परेशान करता था, एज आई एक्सप्रेस यू ना। ओके। उनको बहुत परेशान किया मैंने। मैं उनसे इतने क्वेश्चन पूछता था कि सर ये वाला ऐसे है, तो ये वाला ऐसे कैसे है, सो ही एक्सप्लेन मी ऑल दिस थिंग कि अरे यार ये देखना ये वाला पार्ट, तो लाइक मैं लूप होल्स मुझे वो प्रॉपर्ली दिखा देते थे कि देख तुम्हारे ये लूप होल हैं, ये इस जगह इस चीज की जगह तू ये लिख सकता था या ये बोल सकता था। अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं किन किन पैरामीटर्स को मिस कर रहा हूँ, वो पैरामीटर्स को मुझे लेक्चरेट के बाद एज अ फीडबैक बताते थे कि सिर्फ इन चीजों पे नहीं काम करना है, देयर मस्ट बी सम डेटा आल्सो। ओके। तो मैम दैट इज द पार्ट वेयर आई इम्प्रूव्ड अ लॉट। ऑलराइट। व्हाट अबाउट रूटीन, आप फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या-क्या चीजें इंक्लूड करते हो सिद्धांत, जब एसएसपी आने वाली होती है? बिकॉज़ यू आल्सो नीड अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज़ कंपेयर्ड टू गर्ल्स। लड़कों के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं न कहीं उनके लिए भी आप कुछ चीजें करते थे या यू यूज्ड टू गो विद यू नो व्हाटएवर थिंग्स यू हैव डन? Ma'am, as from the back time previously, I never faced any difficulties because I was into a lot of games. I have played football, lawn tennis, chess. Also, I'm into running, so I do not face any problem regarding the this GTO, especially like individual obstacle part. The thing is, physical fitness and mental fitness is the key ना, तो physical fitness का मैं problem नहीं होता था कभी भी। ठीक है, ओके। सिद्धांत, अगर मैं स्क्रीनिंग के बारे में बात करूँ, अब स्क्रीनिंग ऐसा पार्ट है कि यू गो एवरी टाइम टू एसएसपी, यू हैव टू क्लियर स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड यहाँ पे बीइंग अ रिपीटर यू कैन फाइंड ओआरआर भी आप एक वो इंडिविजुअल पार्ट हो जाता है। पिक्चर परसेप्शन जो है वो भी एक इंडिविजुअल है, बट एक ग्रुप डिस्कशन जो चीज़ है, वहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हो और वो हर बार आप एसएसपी जाओगे तो एक डिफरेंट ग्रुप्स को आप एनकाउंटर करते हो। तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? बिकॉज़ कई बार आई हैव सीन दैट पीपल गोइंग इन, you know, in GD there is so much chaos कि बैच का बैच वॉश आउट हो जाता है। तो डिड यू फाउंड एनी ऑफ सच सिनेरियोज एंड आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी व्हेन इट कम्स टू ग्रुप डिस्कशन? Ma'am, in terms of group discussion, I always found that कि ma'am, that's not a fish market, that's a beehive, that's my consideration. और मैम उसमें आपको लूप होल्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि किस मोमेंट पे पूरा ग्रुप शांत होगा। मैम when see you are four people speaking together, after that time मैम there's a point जहाँ सब शांत होंगे, and मैम that's your chance and you have to stand up and grab it। राइट। मैम तो मैम that is the point, and from there only I was able to identify, like in I was engaged into various group discussions, but मैम when I started to analyze कि इस point के बाद सब चुप हो गए, that is also intuition, but मैम you have to very skilled into it कि आपको थोड़ा सा focused रहना पड़ेगा सबके ऊपर। राइट। So मैम from there only I was able to identify those loopholes and get screened in। ओके। और वहाँ पे मैं अपने thoughts कोड कर देता था
एंड ये किसी भी जीडी में 2 से 3 बार मौके मिलते हैं इस चीज। बिल्कुल, राइट। तो मैम आई थिंक वो बहुत there इनफ only you are able to, yes ma'am, 2 to 3 times is way more than enough to convey your thoughts, and rest you support others. एब्सोल्युटली एंड यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सिद्धांत, बिकॉज काफी बार लोग खड़े होके चीजें डिस्कस करने लग जाते हैं, स्पेशली जो बॉयज का ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे तो बहुत काफी एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो चीज मैंने देखी है। तो बॉडी लैंग्वेज को काफी कूल एंड काम रख के एक स्माइलिंग फेस के साथ आप जीडी को परस्यू कर सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं एक काफी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होती है और आप अलग से हाईलाइट होते हो एज अ कैंडिडेट, यू नो, टू गेट स्क्रीन इन। सिद्धांत, अब हम स्टेज 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 के अंदर पहला टास्क है साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड यहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि यू हैव बीन गाइडेड बाय जोशी सर, तो देयरफॉर आई रियली वांट टू डिस्कस थिंग्स विद एग्जांपल्स, क्योंकि जब हम बार बार एसएसबी चाहते हैं सिद्धांत, तो कहीं ना कहीं पिक्चर्स रिपीट होनी शुरू हो जाती है। एसआरटी भी सिमिलर लगने लगेगी, डब्ल्यूएटी भी सिमिलर दिखेगा। तो यू नो, सिमिलर एसआरटीज के बाद जब हम इस तरह की जो पिक्चर्स हम बार बार देख रहे हैं, तो व्हाट वाज योर अप्रोच? क्या आप उन पिक्चर्स को सेम तरीके से परस्यू करते थे या आप उन पे नई स्ट्रैटेजी के साथ उनको परस्यू करते थे? Ma'am, the thing about ma'am psychology test is ma'am you must know how to perceive same thing in a different way. Ma'am, Yeah. अगर there is a story कि एक गिलास में पानी है and one people say it is half filled and another say it is half empty. Right. So ma'am, both is true. Hmm. But ma'am, you must know which one to say and where. Hmm. कौन सा कहाँ कब बोलना है, ये that is really needed. So ma'am, regarding the same ma'am, टैट में जब भी हम लिखते हैं मैम, देयर इज नॉट एनी क्लासिफाइड सॉल्यूशन। मैम जो भी हो आप उसका प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाओ। एंड व्हाट आई फील कि मैम अगर आपको टैट या फिर साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है तो आपको एक ही चीज पे मल्टीपल सॉल्यूशंस या थॉट्स आने चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज ओवर देयर आपको ये फील होना चाहिए कि कौन से एक्शन कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हैं और कौन से नहीं है। Ma'am, that is the prime example. And ma'am, when I practice my TAT and the PPDT stories, so ma'am, I create multiple themes on the same. Okay. And when I was in the coaching JCSSB पाठशाला, मैम मैं एक ही पिक्चर पे 2 या 3 स्टोरीज लिख के लेके जाता था एंड आई रियली बग जोशी सर फॉर दैट कि सर ये चेक कर दीजिए, प्लीज देख लीजिए सर क्या सही है क्या गलत है। इवन इन द ग्रुप डिस्कशन व्हेन आई फील कि किसी इस थीम अच्छी लगी तो आई जस्ट नोट डाउन द थीम और मैं उस पे स्टोरी लिख देता था। कैन यू तो डिस्कस इट विद एग्जांपल सिद्धांत, ताकि थोड़ा सा अंदाजा yes लगे ma'am, कि अगर कोई इस तरह की पिक्चर है तो आप किस किस तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स को आप परस्यू करते थे? yes I'm sure we all have seen there's the one picture a boy with the book uh, reading or writing something under the shade. Okay. So ma'am, initially I used to write कि he was preparing for his JEE examination or some other NDA examination. But ma'am, on the other hand, I also consider कि एक ये भी थीम हो सकती है कि वो अपने टीचर के लिए टीचर्स डे पे कोई पोएम लिख रहा है एंड ही इज गोइंग टू नरेट इट। सो मैम दिस रिप्रेजेंट कि फर्स्ट इन द फर्स्ट पिक्चर इट रिप्रेजेंटेड वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है अपने कैरियर को लेके। बट मैम इन द अदर पिक्चर और जो अदर थीम है मैम उसमें ये भी तो दिखता है कि वो अपने टीचर से कितना ज्यादा कंफर्टेबल और उनसे लविंग है। बिल्कुल। सो मैम दोनों चीजें सामने आ रही हैं एंड मैम इट गिव्स द एज कि कौन सी स्टोरी आपको कहाँ लिखनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सोर्स ऑफ फैक्टर्स क्या थे? कहाँ से आप प्रिपेयर करते थे? बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे नॉलेज भी इम्पोर्टेंट होती है स्टोरीज़ को बनाने के लिए। तो चाहे वो डब्ल्यूएटी हो, चाहे वो एसआरटीज़ हो, आप कैसे चीज़ों को प्रिपेयर करते थे? हम इसको एग्ज़ाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे सिद्धांत। यस मैम श्योर। मैम मैं ना थोड़ा बिब्लोफाइल नेचर का हूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। सो मैम रिगार्डिंग दिस आई स्टार्टेड रीडिंग मल्टीपल बुक्स। I have my best friend Shubham नाम है मैम उसका एंड he is the one who helped me regarding this. उसी ने मुझे बुक रीडिंग शुरू कराई थी एंड इन नाउअडेज मुझे कोई ना कोई बुक चाहिए होती है अपना टाइम पास करने के लिए या फिर अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। So that is a very good thing because this also become a source of knowledge for me. राइट। And ma'am by reading books, मैम मेरे resources भी develop हो रहे हैं regarding my knowledge. And ma'am it give me the presentability as well कि मैं अपनी चीज़ों को present कैसे करूँ। राइट। तो मैम
there onwards. And ma'am, regarding the facts and factual knowledge, ma'am, YouTube is the very essential. And if I personally recommend you certain platforms or certain pages, so ma'am, CDS Journey and Prashant Dhawan sir. बिल्कुल. Okay. Ma'am, these are the two I especially follow पढ़ने के लिए because they give me enough of knowledge which is really. ऑलराइट. सो दैट कई बार ऐसा होता है ना WATs पे जो हमें वर्ड्स मिलते हैं दे आर वेरी नेगेटिव. लाइक मर्डर इज अ वर्ड इफ दैट वर्ड इज कमिंग जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. तो नेगेटिव वर्ड्स को आप कैसे एनकाउंटर करते हो बिकॉज़ इसको फिर आप किस तरह से फ्रेम करते हो ये भी काफी मायने रखता है. Yes, ma'am. So, ma'am, my approach regarding that is, ma'am, we all have read the mathematics, right? So, if we say if you multiply negative with a negative, it will become positive, right? राइट. So now, ma'am, अगर मुझे murder जैसा कोई word मिलेगा, तो I will induce some another negative word which will lead it to the positivity. As if I frame this, murdering jealousy will is the cure toward happiness. Wow. You even did it in less than 15 seconds. Okay. Okay, got it. I So got this is how I frame it, ma'am. Okay. And the same strategies goes over here also. कि आप multiple thoughts practice करते हो same ही word पे, Okay. which will improve your efficiency. एंड एसआरटीज के अंदर आप किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करते थे बिकॉज यहाँ पे रिस्पॉन्स काफी मायने रखता है. यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स क्योंकि एसआरटीज के अंदर कई बार सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन दी जाती है अलग अलग सिनेरियोज में इन टर्म्स ऑफ योर फादर हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ योर ब्रदर और इन टर्म्स ऑफ योर कलीग. तो एसआरटी के रिस्पेक्ट में आपकी अप्रोच क्या रहती थी. मैम इन द टर्म्स ऑफ एसआरटी मैम चीजें जब तक प्रॉपरली क्लियरली मेंशन नहीं है डू नॉट मेक देम वेरी हाई. मैम देयर इज वन एसआरटी जिसमें लिखा होता है कि यू आर गोइंग विथ योर सिस्टर एंड फ्यू पीपल सराउंडेड यू. मैम इन दैट पर्टिकुलर एसआरटी मैम काफी लोग लिख देते हैं कि वी विल कन्फ्रंट विद देम और some argumentative tensions. राइट. बट मैम सराउंडेड देम इट कुड बी आल्सो पॉसिबल कि आप वो शायद आपसे कुछ पूछ रहे हो, चार लोग कहीं जा रहे हो, उनके आप थॉट्स क्लियर कर दो या फिर उनकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व कर दो एंड यू वेंट टू योर वे दे वेंट टू देयर. एग्जैक्टली. राइट. ओके. सो मैम इट्स मतलब थॉट ऑफ माइंड जो हमारे लिए खुद पजल क्रिएट करता है. So ma'am, do not fall into the pit. Just remain on the surface. जो चीजें लिखी हैं बस वही चीज परसीव करो. राइट. अगर आप एडिशनल थॉट्स ऐड करोगे तो मैम वो खराब होते हैं. राइट. एज इट इज सेड ना मैम कि चीजें बहुत स्ट्रेट होती हैं एसएसबी. आपको कुछ चीजों में बस एक्सप्रेस करना होता है. बिल्कुल. वो हम होते हैं मैम हु टेक टर्न्स ओवर हियर एंड देयर. तो मैम वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. हम प्रेज्यूम करके काफी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. जैसे आपने एग्जांपल दिया वो काफी फेमिलियर है उस चीज से. सिद्धांत अब हम पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं. Your journey took 17 attempts. So you've experienced good interviews, you've experienced bad interviews. Please tell everything about the personal interview. Ma'am, personal interview, ma'am, what I feel that it's a normal conversation between two people. As I can say that one is an officer and another is about to become an officer. So if we go with this mindset only, then you are able to perform well. Otherwise, you will be into the pressure. Right. कि यार वो तो एक अफसर है, मैं कैसे करूं. मैम कल को मैं भी तो बनूंगा. So that is also one of the motivation factor, and it will give you the push to pursue your ambitions. Ma'am, if I cannot do it right now, how am I able to do it in future? Like अगर मैं अभी उसके लिए स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पा रहा हूँ तो मैम मुझे 6 महीने और लगेंगे at next attempt के लिए. Ma'am, that won't be fruitful. Okay. मैम आई मटर माई करेज कि यार एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर और मैं बनूंगा. मैम द और कन्वर्सेशन वेंट स्मूथ. Okay. एंड देयर इज मैम वन ऑफ द लाइक आई डू नॉट फाइंड एनी इंटरव्यू एज वेरी ट्रबलसम, बट यस देयर आर इंटरव्यूज जिसमें मैंने थोड़े बम फोड़ दिए थे व्हिच इज नॉट रियली नीडेड. आई प्रिज्यूम थिंग्स एज इट इज प्रीवियसली मेंशन्ड. मैं चीजें थोड़ी ज्यादा सोच लिया एंड आई गिव सर्टेन रिस्पॉन्सेस जिसमें मैं थोड़ा हीरोइक हो गया था. मैम दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. वो थोड़े से ट्रबलसम हो गए थे. Rest, मैम, I find that all interviews are very insightful.
वहां पे आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा डोमेन रियली वीक है और कौन सा डोमेन रियली स्ट्रांग है। सिद्धांत, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारी सिचुएशन हमें दी जाती है, एंड पीआईक्यू काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनल इंटरव्यू के एसोसिएट में। तो पीआईक्यू की किस किस एरिया के अराउंड हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, या उसके अराउंड आप किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हो? अलॉन्ग विद दैट कुछ सिचुएशन दी हो, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपने कुछ उस तरह की सिचुएशन यू रिमेंबर, और एनी फनी एक्टिविटी दैट हैपेंड ड्यूरिंग योर पर्सनल इंटरव्यू? Yes, ma'am, for sure. Ma'am, there is my interview in Tech 62. Mhm. And ma'am, over there, what happened with me? He interview started asking me questions कि तुम्हारी हॉबीज क्या है मैम। लाइक हॉबीज आर द मेजर फैक्टर जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो वहाँ आपको काफी प्रिपेयर होना चाहिए। आप यू मस्ट नो अबाउट द थिंग्स, लाइक जो भी आप लिख रहे हो उसकी चीजें पता होनी चाहिए आपको, बिकॉज आपकी हॉबीज हैं वो, आप उन चीजों को करना पसंद करते हैं। If you are loving it, you are doing it. Absolutely. So that is the thing. Ma'am, so in my hobbies there is a one thing, trekking मुझे पसंद है। मैं 2-3 trekking sites गया, मुझे अच्छा लगता है, hobbies and interest। So ma'am, the interview once asked me कि you have gone trekking site? मैंने कहा yes। कहाँ गए थे? मैंने कहा सर चंद्रशिला गया था। कहा ओके ओके, नाइस नाइस। कितने लोग गए थे? मैंने कहा सर 5। Okay, now you reach the top of the mountain, now you are coming down and suddenly आपके पैर का दोस्त मुड़ गया and he is suffering a lot। मैं कहा कि सर मैं उसको शूज निकाल के एंड रब करूंगा, देखूंगा कि सही है। नहीं कह रहा है क्योंकि नहीं नहीं वो सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, आई हैव गुड फिजिक, मैं उसको लेके आ जाऊंगा नीचे शोल्डर पे। कि नहीं नहीं, ही इज 100 kg, यू कैन नॉट डू दैट। मैंने कहा ओके। मैं फिर ऑन द माउंटेन्स देयर आर सम ट्रीज। मैंने कहा मैं उसका हेल्प करके विद द हेल्प ऑफ दोस ट्री वुड्स एंड माय शर्ट आई विल क्रिएट अ स्टैचर। So he said okay, now I went heroic here। I said कि now I will create a rolling stretcher जो ऐसे रोल करेगी। तो उसको लेके नीचे आऊंगा। So but this is not the right answer in फौज। मैम एवरीथिंग इज अ टीम वर्क। तो मैम वहां मैं कह सकता था कि हम 4 लोग हैं, आराम से उसको एक नॉर्मल स्ट्रेचर बनाया, कंधे पे लिया और चले आए। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैम आई रियली मेड अ ब्लंडर हियर बिकॉज आई वांटेड टू बी वेरी हीरोइक। तो दिस इज एन एग्जांपल कि मैम जहां पे आप ओवरडू के चक्कर करने के चक्कर में आप फौज की बेसिक चीजें भूल जाते हो। बिल्कुल, फौज नीड ओनली सिंपल थिंग्स एंड वही चलती है। मैम रेस्ट मैम रिगार्डिंग द पीआईक्यू, मैम जब भी आप उसको भर रहे हो ट्राई टू मेक इट वेरी क्लीन बिकॉज दिस विल रिप्रेजेंट कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है चीजों को लेकर। इफ यू आर मेकिंग कट्स ओवर हियर एंड देयर तो मैम सामने वाले को भी लगेगा कि यार ये तो खुद में ही कंफ्यूज है, क्या लिखना है, इसको आइडिया नहीं है। द मोर क्लियर द PIQ is, the better impression you get in the study। Right। So ma'am, और मैम in every domain मैम you must master the reasons कि अगर आपके 12th में परसेंटेज कम है तो क्यों है, और हाउ यू आर एबल टू जस्टिफाइड कि सर ये रीजन है। एंड अगर रीजन है कि सर मैं खेलने लगा था या आई स्टार्ट मटरिंग ओवर हियर एंड देयर, तो एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड एज द जस्टिफिकेशन। राइट मैम, दिस इज द पॉइंट एंड द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रेम्ड फ्रॉम योर प्लेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, योर एनसीसी, योर बैक like back foot कि आप कहाँ failures are the thoughts and how you deal with it। Absolutely, okay, ठीक है। So that जो आप टेक्निकल एंट्री के लिए गए थे, तो आई एक्सपेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो, या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए स्पेशली जिस अटेम्प्ट में आप रिकमेंड हुए हो, तो एनी क्वेश्चन डू यू रिमेंबर? Yes ma'am, in my attempts in which I got recommended ma'am, उन्होंने लाइक मैम जिस भी प्रोफेशन के लिए आप जा रहे हो आपको उस प्रोफेशन के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। इफ ही इज आस्किंग मी अबाउट रेडार, सो आई वुड नो कि कौन कौन से रेडार हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोनार एंड रेडार, व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज लो फ्रीक्वेंसी। मैम दीज आर द टेक्निकल क्वेश्चन द इंडिविजुअल मस्ट बी अवेयर ऑफ।
क्योंकि बिल्कुल मैम कल को उसे इन्हीं चीज़ों से डील करना है और इन्हीं चीज़ों का अगर सेटबैक उसे नहीं पता रहेगा, तो मैम इट वोंट बी हेल्पिंग। बिल्कुल राइट गॉट दैट any blunder you make throughout your 17 attempts? I would really like to know because there are times they put pressure and we create mistakes. So if you remember any of it. Ma'am, the as I mentioned previously, the one heroic one, Mhm. and another one is, ma'am, there are some series of questions. That Right. is, we call it Yeah. CIQ. Ma'am, these are the questions from which the interview frames your like a posture. वो frame कर लेता है कि ये बंदा इस टाइप का है. The intellect is good. He is able to observe. He is able to remember the questions. मैम वो चीज मैम अगर वो CIQs आपको याद होते हैं, ऑलरेडी याद होते हैं, या फिर आप उन चीजों को कन्वे कर पाते हो इफेक्टिवली, तो मैम दैट गिव्स यू एन एज इन द इंटरव्यू बिकॉज योर थॉट्स आर वेरी क्लियर ऑन द सेम ना। और मैम उन्हीं CIQs के अंदर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फिर। बिल्कुल एंड स्टूडेंट्स एंड द कैंडिडेट्स जनरली डू नॉट टेक इट वेरी सीरियसली कि अरे यार कर लेंगे, बट मैम व्हाट आई फील कि मैम वो बहुत नेसेसरी होता है बिकॉज it represents you कि आप किस टाइप के हो, बिकॉज दैट इज द पार्ट ओवर विच यू गॉट प्रेशर्ड, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन एक बार पूछ रहा होता है। right exactly okay मैम दैट इज द थिंग मैम। uh, एंड एज अ ब्लंडर आई डू नॉट फॉलो एनी, mhm. so currently I'm not able to recall. Okay, Siddhant. Siddhant, if I talk about GTO, GTO is one of the interesting part. यहाँ पे group activities होते हैं, you enjoy a lot. And no cannot ask, we cannot discuss, but there are certain things I really want to talk to you about. Precisely जैसे कुछ group task हैं जब हम ground में जाते हैं तो यहाँ पे ground task होते हैं, PGT हो गया, HGT हो गया, individual task हो गया. So we know exactly structures क्या होने वाले हैं and over an attempt तो repetitiveness हो जाता है. तो आपको you know I think with the time also you got familiar with the structures. So was it helpful for you in terms of performing those tasks? Yes ma'am, it is very helpful ma'am. In every attempt आपको हमेशा एक चीज ऐड होती है, इधर यू गेन फ्रेंड्स, इधर यू गेन एक्सपीरियंस, और इधर you gain some knowledge or intellect. That's for sure. That is a very positive thing about SSB. You never come barehanded. Right. So, ma'am, in the GTO, it goes the same. You, whenever you perform GTO, you get the experience to dealing with the ground tasks. So, ma'am, observing the structure and generating the idea next to you is represent कि आप चीजों को कितना अच्छी तरह ऑब्जर्व कर पा रहे हो और कितनी एनालिटिकल स्किल्स का अपनी एनालिटिकल स्किल्स का यूज करके आप कितने इफेक्टिव सोल्यूशन जनरेट कर पा रहे हो। इवन समटाइम्स एसेसर ट्राई टू एलिमिनेट योर रिसोर्सेज आल्सो कि ये रिसोर्स नहीं है तुम्हारे पास, ये रिसोर्स नहीं है, एंड यू आर स्टिल डेवलपिंग न्यू थॉट्स एंड न्यू सॉल्यूशंस। सो मैम दिस रिप्रेजेंट कि हाँ दैट इज रियली नीडेड मैम, दैट गिव द एज मैम इन द ग्रुप। एंड सिद्धांत कमांड टास्क काफी इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है बिकॉज आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टास्क के अंदर, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू चूज टू सबऑर्डिनेट्स। तो आपका क्राइटेरिया क्या रहता था, ऑन व्हाट बेसिस यू यूज्ड टू चूज दोस कैंडिडेट्स? मैम इन एवरी SSB मैम आई फॉलो द सेम मेथड कि मैम मैं ऑब्जर्व करता था कि हु आर द पीपल व्हिच आर रिसोर्सफुल टू मी। मैम हमें जब भी कोई कमांड टास्क मिलता है तो मैम हमें स्ट्रक्चर देख के आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का कैंडिडेट या किस टाइप का सबऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो आई जनरली चूज वन टॉल है एंड अनदर टॉल बिकॉज ही मस्ट मतलब उसका थोड़ा वेट ज्यादा होगा, सो दिस गिव मी द एज, क्योंकि वहां पे मुझे वेट का काम पड़ेगा क्योंकि हमेशा किसी न किसी को पीछे से बुलाना होता है था वेट का यूज करके। So this give me the edge, and another is the person who is able to understand my ideas very clearly. कि जो भी मैं उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर पीपल मैम जिनको इंस्ट्रक्शन समझ में आता है बट दे टेक टाइम, बट देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस, उनको समझ में आता है कि हाफ इंस्ट्रक्शन में क्या करना है। बिल्कुल। So I choose one among them. So these are my two preferences which I always follow, and they always help me a lot. Okay. We have come to an end, Siddharth, and you know हमने हर चीज के बारे में काफी सारा डिस्कशन किया है, but there are people who are still struggling, who are preparing, and they are watching you. Any message you want to give to them? Because ultimately, it's sometime
luck also comes into play, चाहे आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर लो, पर डीमोटिवेशन फैक्टर ऐसा चीज है सिद्धांत जो अगर आ जाए आपकी प्रिपरेशन में तो कहीं ना कहीं आपकी रिकमेंडेशन को डिले कर देता है. So anything you want to say because you have achieved it, you have made it. So any message? Ma'am, there is one thing. When you have capabilities, Mhm. there is, ma'am, as we say that every coin has the two faces. Ma'am, same it goes with the capabilities also. When you have capabilities and you are not able to break through this SSB, ma'am, then there's another thing that is called frustration. आपको पता होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका नहीं हो रहा तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. तो मैम, डू नॉट, what I suggest ki do not get frustrated and do not get very desperate about the attempt. Just enjoy the task and the actions. Definitely you are able to get it. Right. Right, Saddam. Thank you so much for joining me. It was wonderful talking to you, and I'm sure a lot of juniors are watching you and they might join you in the academy and meet you. But thank you so much for joining me. All the very best for the upcoming time. Thank you, ma'am. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.